Very good evening, all the participants. So today we'll start with this pre-pack. I've shared certain files in the group also, in the morning. Hopefully you have seen some of them. So 54A, how it is different from corporate insolvency resolution process? Anyone? How it is different? The pre-packaged insolvency resolution process, the control is with the CD only. Yes. And So this is one difference. right, And sir. whether the amount of default also is different in pre-pack or it is same as CIRP? 10 lakh here, sir. 10 lakhs. So amount of default is different. Management and control is different. Any other difference? Is applicable to MSME only. It is applicable on MSMEs. Corporate Yes. debtor should be an MSME. Yes, so it is only applicable to MSMEs. And this 10 lakhs is the minimum default or maximum default? Minimum. Minimum default, yes. So these are some of the unique features of this pre-pack insolvency resolution process. Besides that, there are certain concepts like base resolution plan, which is prepared by the CD. So it is basically some sort of agreement between the financial creditors and the corporate debtor before approaching the adjudicating authority. So we'll see about it in detail. So what it says, section 54A. Section 54A says that corporate debtors eligible for... Acha, whether any creditor can initiate this pre-pack or only corporate debtor can initiate? Only corporate debtor, sir. No other creditor can initiate. Okay. Now, neither financial nor operational. Okay, suppose you are dealing with an MSME and you have supplied goods and there is a default. So what is the option available with you as a creditor? As a creditor, we have MSME as a redressal forum for that. There we can claim. It is not for the insolvency, we cannot go. Okay. Suppose MSME is not paying your dues, then besides MSME forum, what are the other options? You can file suit, sir. Yes, so you can go to commercial courts, you can file a civil suit. If it is secured, then you can go to DRT also. So these are some of the options available depending upon what is your constitution and what is the constitution of this pre-pack. And with whether this pre-pack is available only in case of corporate persons or non-corporate MS. Suppose there is a non-corporate MSME, whether they can also avail this facility or not? No, sir. Only corporate can go. Yeah, so only corporate and those two in MSME sector. And what is the criteria for MSME? Investment and turnover. What should be the investment for micro? Micro is 1 crore investment and 5 crore turnover. 5 crores turnover, yes. And in case of small? Small is 10 crores, 1 to 10, more than 1, up to 10 crores and 50. Okay. And medium? Medium is 50 and 250, sir. Medium and 250. Suppose the investment is exactly 10 crores. So then whether it will fall in small or micro? Turnover is exactly 10 crores or say exactly 50 crores. Turnover is exactly 50 crores. Then where it will fall? Whether in small or medium? The wording used is does not exceed. So does not exceed means it will be considered to be a small enterprise. The wording used in the notification is investment does not exceed 1 crore and turnover does not exceed 5 crores. So the wording is if there is exact figure, so 50 crores it will be treated as small with 50 crores turnover. Now 54A. 54A corporate debtors eligible for prepackaged insolvency resolution process. An application for initiating prepackaged insolvency resolution, so only debtor can make, may be made in respect of a corporate debtor classified as MSME of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act. And the criteria we have already seen.
The investment criteria is 1 crore, 10 crore, 50 crores, and turnover criteria for micro, small, and medium is 5 crore, 50 crore, and 250 crores. Without prejudice to subsection 1, an application for initiating prepackaged insolvency resolution process may be made in respect of a corporate debtor who commits a default. So default is also necessary. Referred to in section 4, subject to the following conditions. It has not undergone pre-packaged insolvency resolution process or completed CIRP, as the case may be, during the period of 3 years preceding the initiation date. So here the period is 3 years. So if you have undergone pre-packaged insolvency resolution process or CIRP has been completed during the period of 3 years preceding the initiation date, then you cannot make an application here. You are not undergoing CIRP process. An order requiring it to be liquidated is passed. So a liquidation order is passed here. Is eligible to submit a resolution plan under 29A. So if you are as a corporate debtor not entitled to submit a resolution plan under 29A, then also you cannot make an application for prepack. This is the notification. Let us see the notification, what it says. So if you see the notification, it says the amount of default specifies 10 lakh rupees as the minimum amount of default. The financial creditors of the corporate debtor, not being its related parties, representing such number and in such manner as may be specified, have proposed the name of the insolvency professional. In case of CIRP, we have seen that the financial creditor who wants to move an application under section 7, he gets in touch with the insolvency professional and he gets sent in form number 2. Similarly, in case of corporate debtor, the corporate debtor gets in touch with the insolvency professional. But here, who is approving? The financial creditors of the corporate debtor, not being its related parties, representing such number and in such manner as may be specified. So what is that number? The number is 10. Basically, not constituting not less than 10% of the debt. So if you are an unrelated financial creditor, you can propose the name if your debt is not less than 10% of the debt. Suppose 400 crore is the total debt. Out of that, if your debt is 40 crores or more, only then you can propose the name of the insolvency professional. So naturally, there can be more than one proposals. And then how it will be selected? By voting, 66%. So financial creditors of the corporate debtor, not being its related parties, representing such number and in such manner as may be specified, have proposed the name of the insolvency professional to be appointed as a resolution professional for conducting the prepackaged insolvency resolution process of the corporate debtor. I think I have shared the and the financial creditors of the corporate debtor, not being its related parties, representing not less than 66% in value, have approved such proposal in such form as may be specified. So let us see regulation 14 also. So what regulation 14 says? Provided that where a corporate debtor does not have any financial creditors, not being its related parties, the proposal and approval under this clause shall be provided by such persons as may be specified. So now let us see regulation 14 also side by side. So these are the regulations. I hope now my screen is visible to you.
Regulation 14. Let us see what Regulation 14 says. So this is Regulation 14. Regulation 14 क्या बोलता है? Approval by financial creditors. For the purposes of Clause E of subsection 2 and section 3 of section 54A, the applicant shall convene meeting of the financial creditors who are not related parties of the corporate debtor. So who will convene this meeting? The applicant. And who is this applicant? The corporate debtor. The notice of the meeting under sub-regulation 1 shall be served to the financial creditors who are not related parties of the corporate debtor at least 5 days before the date of the meeting, unless a shorter time is agreed to by all of them. So if they want a shorter notice, it has to be agreed to by all of them. The notice of the meeting under this regulation. Yes. Query here. It is agreed to by all of them. Who are these all of them? The financial creditors. Unrelated financial creditors, yes. Okay. Whosoever are entitled to participate in this meeting. The notice, it says now, served to the financial creditors who are not related parties. So basically, the unrelated financial creditors, all of the unrelated financial creditors have to agree. Okay. The notice of the meeting under this regulation shall indicate the date, time, and venue of the meeting and enclose a list of creditors along with the amount due to them in Form P2. The financial creditors who are not related parties of the corporate debtor and have not less than 10% of the value of the total financial debt of such creditors may propose names of the insolvency professionals for the purpose of Clause E of subsection 2 of section 54A. So here the question is whether those constituting only not less than 10% will be invited to the meeting or all the unrelated financial creditors will be invited to the meeting. All So shall not be. related and having not less than 10%. No, sir, all will be invited. Yes, all will be invited, but Main proposal power is only with those who are. yes. So there, but who can propose? Propose is to be done by only those constituting not less than 10%. And then how selection will be done? 66%. So voting, but they are entitled to vote now. Unrelated, suppose there is an unrelated financial creditor. He is having only 1% of the debt. So he is entitled to vote. The approval of the terms of the appointment of resolution professional under clause E shall be in Form P3. Okay. Sir, I have a query in 14 Yes. clause 4. Yes. Sir, the proposal and its approval shall be done in the same meeting. Why not? Okay. It may be done in the same meeting. Suppose it is adjourned for some reason, it may be done in next meeting also. Okay. And sir, it is written that the value of total financial debt of such creditors, whether the financial debt of unrelated or related, shall be segregated or shall be not. No. We are giving the notice of meeting only to unrelated financial creditors. Means the financial creditors who are having not less than 10% of value of financial debt to unrelated financial creditors shall be considered. No. Actually, there are two things. Number one, who will be invited to this meeting? Only those who are unrelated financial creditors. Percentage is not important here. Second is But for the who purpose can of propose. Second is who can propose the name of the insolvency professional. Those constituting not less than 10% of the debt. Who can vote? Everybody can vote. All those who are invited to the meeting can vote. What is So the the value, percentage? the 10% shall be calculated on debt which is related to unrelated party and related party. Yes. Only unrelated parties. Yes, because Only unrelated parties debt. yes. Only that. Okay, sir. It says now the value of the total financial debt of such creditors. So the word such creditors is important. Okay, sir. It says value of the total financial debt of such creditors. So the approval of the terms of appointment shall be in Form P3. The terms of appointment of the resolution professional under this regulation shall include. So
First of all, fees payable to him for performing duties under subsection 1 of section 54B. Because here, some preparation is required in pre-pack even before filing of the application. So the fees for this part prior to making the application will be separate. Then fees payable to him and expenses to be incurred by him for conducting the process are different. Suppose the application is admitted. And third is fees payable to him and expenses to be incurred by him in case management of the corporate debtor is vested with him under section 54J. So for the time being, the control vests with the management only. The powers of the management does not get suspended. So they continue to stay in control. But the COC may at any time vest the management with the resolution postal with 66% majority. So yes. तो यहां तक तो क्लियर हो गया, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ है क्या? अगर है तो पूछ लीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले व्हाट द सीडी विल डू, सीडी विल प्रिपेयर ए लिस्ट। ठीक है, फॉर्म P2 में ही विल प्रिपेयर ए लिस्ट। वो लिस्ट जो है, आप फॉर्म P2 में देख लेते हैं, फॉर्म P2 क्या कहता है। फॉर्म P2 आपका रेगुलेशंस के पीछे है, एक बार देख लीजिए। लेट मी शो यू फॉर्म P2 ऑल्सो, तो क्लियर हो जाएगा ना फॉर्म P2 में आएगा क्या। ये है फॉर्म P2, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, नेम ऑफ द क्रेडिटर, अमाउंट ऑफ क्लेम, परसेंटेज ऑफ क्लेम। देखो दोनों चीजें दे रहा है ये, लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अनरिलेटेड, लिस्ट So ऑफ your फाइनेंशियल screen is not क्रेडिटर्स visible. रिलेटेड, अलग से दे रहे हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स अनरिलेटेड, लिस्ट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स रिलेटेड, इस तरह से लिस्ट बनानी। लिस्ट ऑफ अदर क्रेडिटर्स अनरिलेटेड, लिस्ट ऑफ अदर क्रेडिटर्स रिलेटेड, क्योंकि ये तो कंप्लीट लिस्ट ही बना लेगा ना एक बार, ऐसा तो नहीं ना सिर्फ रिलेटेड की लिस्ट बनाएगा, वो रिलेटेड हो चाहे अनरिलेटेड हो, फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, ऑपरेशनल क्रेडिटर हो, अदर क्रेडिटर हो, इसी लिस्ट में सारा काम हो जाएगा P2। ठीक है, और फॉर्म P3 क्या है, अप्रूवल ऑफ टर्म्स। सो 3 टाइप्स ऑफ फीस इज पेएबल। Sir, form is not visible actually on the screen. अच्छा एक मिनट, हाँ अब नजर आ रहा होगा, ये है फॉर्म P2, नाउ इट इज विजिबल। Yes, sir. हाँ जी, सो ये है लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अनरिलेटेड, इस तरह से। अब दोबारा चलते हैं अपने, तो ये फॉर्म P3 आप दिखा दीजिए वो फॉर्म consent। P3, हाँ हाँ, P3 दिखा देते हैं। P3, ये P3 है। P3 में क्या है, ये है P3 अप्रूवल ऑफ टर्म्स, कि भाई मीटिंग वाज हेल्ड, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स वाज प्रोवाइडेड, डिटेल्स ऑफ द क्रेडिटर प्रेजेंट, नंबर ऑफ क्रेडिटर्स, ये प्रपोज द नेम। ठीक है, फॉलोइंग क्रेडिटर्स हैव अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट हैविंग रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज ऑफ वोट देना पड़ेगा ना आपको। और ये 3 टाइप्स ऑफ फीस इज पेएबल। ठीक है, बिफोर एप्लीकेशन, ड्यूरिंग प्रोसेस एंड इन केस मैनेजमेंट इज वेस्टेड। सो ऑल दीज थिंग्स आर। एक काम तो ये हो गया, सबसे पहले इन्होंने लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद में क्या किया, those constituting not less than 10% they proposed and with 66% majority they approved. Now suppose there are no unrelated financial creditors, तो unrelated operational creditors कर लेंगे इसमें। ठीक है ना, और यहाँ पर वो not less than 18, not more than 18, वो वाला वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें एट दिस स्टेज। समझ गए नहीं, यहाँ पर वैसी कोई बात नहीं है जैसे वहां COC में होता ना, CIRP में दोज कॉन्स्टिट्यूटिंग मतलब 18 लार्जेस्ट ऑपरेशन, largest operation. वो वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जितने भी अनरिलेटेड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है वो सेलेक्ट कर ले। अगर मान लो कोई भी अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो हो सकता है ना,
कि भाई कोई अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं, सारे ही रिलेटेड पार्टीज हैं, तो उस केस में ऑपरेशनल क्रेडिटर होंगे। नाउ द majority of the directors or partners of the corporate debtor, as the case may be, have made a declaration in such form as may be specified inter alia, stating that ये majority of the directors ने एक डिक्लेरेशन दिया। डिक्लेरेशन क्या दिया, एक बार ये भी देख लेते हैं। रेगुलेशन 16 है इसके लिए, तो लेट अस सी रेगुलेशन 16 ऑल्सो। ये हमारा डिक्लेरेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन आपका ये होगा फॉर्म P6 के अंदर। तो फॉर्म P6 और P7 भी देख लेते हैं। ये है फॉर्म P6। फॉर्म P6 क्या बोलता है, डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स पार्टनर्स, ठीक है। मेजोरिटी ने देना है ये डिक्लेरेशन, किसको देना है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। डिक्लेरेशन ऑफ इनिशिएटिंग प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, नेम एंड डेजिग्नेशन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, एड्रेस, रिप्रेजेंटिंग मेजोरिटी अमंग द डायरेक्टर पार्टनर्स, हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस, डिक्लेयर एंड अफर्म एज अंडर। क्या डिक्लेरेशन देना है, द कॉर्पोरेट डेटर शैल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस विद इन इतने डेज के अंदर इसको ये फाइल कर दे, ठीक है। द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इज नॉट बीइंग इनिशिएटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन। द क्रेडिटर्स हैव अप्रूव्ड द नेम ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो हमने पहले प्रोसेस दिया ना भाई, नॉट constituting not less than 10% have proposed and with 66% majority they have approved। तो यहां पर वो रेफरेंस आ रहा है इस डिक्लेरेशन में। The creditors have approved the name of the IP having registration number in the meeting of creditors convened this now with regulation, ठीक है। The details of the corporate debtor, ये corporate debtor की डिटेल्स, ये डिक्लेरेशन आपको देना है, टू बी साइंड बाई ऑल द डायरेक्टर्स या पार्टनर्स मेंशन्ड इन पॉइंट नंबर 1, जो भी मेजॉरिटी। और P7 भी देख लेते हैं, ये भी डिक्लेरेशन रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस आपको देना है। चलिए दोबारा चलते हैं वहां। क्या बोल रहा है डिक्लेरेशन में, कितने दिन के अंदर ये आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है, विद इन ए डेफिनेट टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। 90 डेज के अंदर आपको ये एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ये इन्होंने क्या दे दिया, डिक्लेरेशन, किसको दिया, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, ठीक है। The pre-packaged insolvency resolution process is not being initiated to defraud any person and the name of the IP proposed and approved to be appointed as a resolution professional, ठीक है। क्योंकि इसमें रेफरेंस दे दिया कि भाई क्रेडिटर्स ने ये प्रपोजल दिया है। The members of the corporate debtor have passed a special resolution, एक स्पेशल रेजोल्यूशन और पास करनी है मेंबर्स को। ये तो पहले वाली जो डिक्लेरेशन है ये तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स या पार्टनर्स को पास करनी है, और रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन किसको पास करनी है, ये पास करनी है मेंबर्स को। मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर हैव पास्ड द स्पेशल रेजोल्यूशन और एट लीस्ट 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स एज द केस में बी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर हैव पास्ड ए रेजोल्यूशन। क्योंकि कॉर्पोरेट डेटर के केस में क्या होता है, शेयर कैपिटल होती है, ठीक है। एलएलपी में कोई शेयर कैपिटल नहीं होती, तो उस केस में क्या होगा, उसमें 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स, यहां डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है, पार्टनर्स है, ठीक है। और मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर कितने, मेंबर में नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो उनकी शेयर कैपिटल है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज द केस में भी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, मतलब जिसके पास 75% मेजोरिटी है उतने मेंबर्स अप्रूव करेंगे इन केस ऑफ कंपनी, ठीक है। एंड इन केस ऑफ एलएलपी 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स। They passed a resolution approving the filing of an application for initiating pre-packaged insolvency resolution process, ठीक। The corporate debtor shall obtain an approval from its financial creditors, not being its related parties,
representing not less than 66% in value of the financial debt due to such creditors for the filing of an application. ठीक है, जो अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है ना, इसे एक और अप्रूवल लेना है। एक तो इन्होंने नाम का अप्रूवल दे दिया, ठीक है ना, एक इनसे ये अप्रूवल लेना है फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन से पहले क्या क्या स्टेप्स हो गए? एक तो डिक्लेरेशन हो गया, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन हो गई, और ये तीसरा हो गया अप्रूवल फ्रॉम फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, अब आप देखो मोटा मोटा ये यहीं पर ही अप्रूवल दे दिया 66% ने, तो काम काफी आसान हो गया ना। अभी एप्लीकेशन फाइल नहीं हुई तो इन्होंने फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन के लिए भी अप्रूवल दे दिया। ठीक है, फॉर इनिशिएटिंग in such form as may be specified, provided that where a corporate debtor does not have any financial creditors, not being related parties, the approval under this section shall be provided by such persons as may be specified. ठीक है, और ये अप्रूवल लेने से पहले एक बार देख लेते हैं कि रेगुलेशन 14 क्या कहता है। रेगुलेशन 14 भी एक बार देख लेते हैं। ये है रेगुलेशन 14। ठीक है, ये मीटिंग कन्वीन होगी इसकी, ये तो हो ही गया हमारा, ये इन्होंने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम अप्रूव कर दिया। ये अप्रूवल फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन 7 नंबर पॉइंट, अप्रूवल फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन शैल बी इन फॉर्म P4। ठीक है, और अगर अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर फॉर्म P4 भी देख लेते हैं एक बार। ये है फॉर्म P4, अप्रूवल फॉर इनिशिएशन। ठीक है, द मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हु आर नॉट रिलेटेड पार्टीज वाज हेल्ड ऑन दिस डेट, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वर एनक्लोज्ड विद द नोटिस ऑफ द सेड मीटिंग, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स दिया था, कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन यहां पर देना है, कॉपी ऑफ मेंबर स्पेशल रेजोल्यूशन, बेस रेजोल्यूशन प्लान एंड अदर एलिमेंट, डिटेल्स ऑफ द क्रेडिटर्स प्रेजेंट इन द सेड मीटिंग आर, ये सारे एनेक्सर ए में दे रखे। ठीक है, फॉलोइंग क्रेडिटर्स हैव अप्रूव्ड द इनिशिएशन दैट इज ड्यूली ऑथराइज्ड टू साइन दिस फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। ठीक है, तो ये है, ये अप्रूवल है। ठीक है जी, फॉर फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन prior to seeking approval from financial creditors under subsection 3, the corporate debtor shall provide such financial creditors with, अब फाइनेंशियल क्रेडिटर से अप्रूवल लेना है आपको। ठीक है, किसका अप्रूवल लेना है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के नाम का नहीं, फॉर फाइलिंग ऑफ दिस एप्लीकेशन। तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे ना। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने? एक तो भाई डिक्लेरेशन, हमने फाइल डिक्लेरेशन है हमारा, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन है, एक बेस रेजोल्यूशन प्लान which conforms to the requirements referred to in section 54K and such other conditions as may be specified. And such other information and document as may be specified. Now 54B. ठीक है, तो अभी तक कितने प्रोसेस हो गए हमारे? काफी सारे प्रोसेस हो गए। सबसे पहले तो हमने क्या किया, P2 में लिस्ट बना ली। लिस्ट बना करके हमने जो है, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है, अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग लेस देन 10%, दे प्रपोज द नेम and with 66% majority they approved the name of the RP. ठीक है, then we made a declaration that okay, we will be filing an application with the adjudicating authority. ठीक है, declaration from majority, and this is not being initiated to defraud any person, and name of the insolvency professional. फिर मेंबर्स का रेजोल्यूशन हो गया, स्पेशल रेजोल्यूशन या विथ 3/4 मेजॉरिटी। फिर कॉर्पोरेट डेटर ने अप्रूवल ले लिया, किससे? अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर से। और उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट दे दिए? ये डिक्लेरेशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, बेस रेजोल्यूशन प्लान, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक,
54B। अभी देखिए, अभी एप्लीकेशन फाइल नहीं हुआ, इससे पहले ही इतना काम हो गया। अब ये काम कौन कर रहा है? आरपी कर रहा है ना बेसिकली। तो आरपी को फीस तो मिलेगी ना, अभी एप्लीकेशन फाइल ही नहीं हुई। तो 54B is talking of duties of the insolvency professional before initiation of prepackaged insolvency resolution process. The insolvency professional proposed to be appointed as the resolution professional shall have the following duties commencing from the date of approval under clause E of subsection 2 of section 54A। ठीक है, ये डेट ऑफ अप्रूवल से, कौन सी डेट? ये जो आपका ई क्लॉज है, ये यहां जब इसका नाम अप्रूव हो गया 54(2)E। The period of 90 days for submitting declaration shall also be from that day. नहीं, दैट विल बी फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, लिखा ना, विद इन ए डेफिनेट टाइम पीरियड। इन्होंने डायरेक्टर्स ने एक डिक्लेरेशन दिया, डिक्लेरेशन तो एक स्पेसिफिक डेट को होगा, और उसी डेट से ही आपके 90 डेज काउंट, मैक्सिमम है 90। गुड क्वेश्चन। क्या करना है इसको? अब इसकी क्या क्या ड्यूटीज है? ही हैज टू प्रिपेयर ए रिपोर्ट इन सच फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड, क्योंकि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का भी रोल थोड़ा सा आसान कर रहा है। तो ये चेक कर लेगा कि भाई ये एलिजिबल है या नहीं। हमने बहुत सारी कंडीशंस पढ़ी, एमएसएमई होना चाहिए, डिफॉल्ट इतना होना चाहिए, कोई प्रीपैक सीआईआरपी वगैरह नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द लास्ट 3 years। ठीक है ना? तो ये सारी कंडीशंस कौन देखेगा? ये खुद ही देख लेगा। एंड ही विल प्रिपेयर ए रिपोर्ट इन सच फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड कंफर्मिंग whether the corporate debtor meets the requirements of section 54A, and the base resolution plan conforms to the requirements referred to in clause C of subsection 4 of section 54A. File such reports and other documents with the board as may be specified, and perform such other duties as may be specified. तो ये रोल किसका है? आरपी। बिफोर इनिशिएशन, the duties of the insolvency professional under subsection 1 shall cease। अब ये ड्यूटीज कब खत्म हो जाएगी? इसके लिए अलग फीस है, हमने फॉर्म के अंदर देख लिया था, फॉर्म में लिखा था ना, इसकी इस पीरियड की फीस अलग है, अगर एप्लीकेशन एडमिट हो जाए उसके बाद फीस अलग है। द कॉर्पोरेट डेटर फेल्स टू, बालो एप्लीकेशन फाइल ही नहीं करते, तो ये वाली ड्यूटी खत्म है इसकी। ठीक है, so the duties of the insolvency professional under subsection 1 shall cease if the corporate debtor fails to file an application for initiating prepackaged insolvency resolution process within the time period as stated under the declaration। ठीक है, और the application is admitted or rejected। ठीक है, अगर एडमिट हो गई तो भी ड्यूटीज खत्म, फिर दूसरी ड्यूटीज शुरू हो जाएगी ना, फिर रोल दूसरा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुई है इसकी, इसका सिर्फ प्रपोजल है। Who is the appointing authority for the resolution professional? Adjudicating authority। ठीक है, the fees payable to the insolvency professional in relation to the duties performed under subsection 1 shall be determined and borne in such manner as may be specified, and such fees shall form part of the prepackaged insolvency resolution process cost if the application is admitted। अगर एप्लीकेशन एडमिट हो गई तो ये प्रीपैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, और नहीं होगा तो कंपनी बेयर करेगी। नाउ 54C। 54C is talking of application to initiate prepackaged insolvency resolution process। Now where a corporate debtor meets the requirements of section 54A। 54A की रिक्वायरमेंट्स हमने पहले ही देख ली, ठीक है ना। 54A में यहां इशारा दिया हुआ ना कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 years preceding the initiation date, it is not undergoing CIRP, no order requiring it to be liquidated passed, is eligible to submit a resolution plan, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ए कॉर्पोरेट एप्लीकेंट देयर ऑफ मे फाइल एन एप्लीकेशन। यहां एप्लीकेशन कौन फाइल कर रहा है? कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट हमारे को डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है ना, सेक्शन 5 में दे रखी है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की डेफिनेशन। Yes, sir. तो सेक्शन 5 से हमें
जो डेफिनेशन है सेक्शन 5 सब सेक्शन 5 कहता है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन है, वो डेफिनेशन भी यहाँ पर यूज हो, क्योंकि ये हमारा कौन सा चल रहा है, पार्ट 2 ही चल रहा है, अभी पार्ट 3 नहीं है। तो where a corporate debtor meets the requirements of section 54A, a corporate applicant thereof may file an application with the adjudicating authority for initiating pre-package process, PPIRP. ठीक है, the application under subsection 1 shall be filed in such form containing such particulars in such manner and accompanied with such fees as may be prescribed. तो इसके लिए आपके पास रूल्स है, रूल 4 आता है इसमें, तो रूल 4 के हिसाब से आपको देखना है कि भाई क्या इसमें फीस है और क्या क्या कहाँ दिया। अब एक बार रूल 4 भी देख लें क्या, ये रूल्स, ये रूल आ गए, और रूल में ये नजर आ रहा होगा आपको, रूल 4 नजर आ रहा है, फाइलिंग ऑफ Yes. एप्लीकेशन। हाँ, तो क्या कहता है, ए कॉर्पोरेट एप्लीकेंट शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग पीपीआईआरपी इन फॉर्म 1 accompanied with affidavit, documents और records, ठीक है, along with a फीस कितनी है, 15,000, provided that in case electronic facility is not available, application may be filed in physical, ठीक है, और इसकी कॉपी किसको देनी है, टू द बोर्ड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट और बाय हैंड और बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस बिफोर फाइलिंग इट विद द एडजुडिकेटर, ठीक। तो ये है, ये आपका फॉर्म 1 है, फॉर्म 1 में आपने क्या क्या डिटेल्स देनी है, ये फॉर्म, पर्टिकुलर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा फॉर्म, तो कोई बात नहीं, अब दोबारा चलते हैं हम अपना वहीं पर ही। तो आपको रेगुलेशंस और रूल्स मिला के पढ़ने हैं, ठीक है, मैंने रेफरेंस दिया हुआ जहां जहां रूल है, जहां जहां रेगुलेशन। द कॉर्पोरेट एप्लीकेंट शैल अलोंग विद द एप्लीकेशन फर्निश द डिक्लेरेशन, स्पेशल रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन एज द केस में बी एंड द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स फॉर इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये क्या क्या लगाएंगे, डिक्लेरेशन लगा देंगे इसके साथ में, एप्लीकेशन के साथ में, ठीक है, एप्लीकेशन तो फॉर्म तो भरना ही है, फॉर्म भरने के अलावा आपको इसके साथ डिक्लेरेशन लगाना है, स्पेशल रेजोल्यूशन या रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी के केस में और अपना रेजोल्यूशन इन केस ऑफ एलएलपी, एंड द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स फॉर इनिशिएटिंग प्रीपैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 54A, ठीक है, द नेम एंड रिटन कंसेंट ऑफ द आईपी, ठीक है, उसका भी नाम और रिटन कंसेंट जाएगी इसमें, और फिर डिक्लेरेशन जाएगा रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पीयूएफई ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये पीयूएफई ट्रांजेक्शन वाला भी हमने देखा था ना, मेरे ख्याल था आपका रेगुलेशन नंबर है, P7, P7 में आया था फॉर्म हाँ, P7। ये रूल्स और ये रेगुलेशंस, तो अगर हम रेगुलेशन देखें, ये है फॉर्म P7 रिगार्ड ये रेगुलेशन, ये रेगुलेशन है, तो ये फॉर्म P7 डिक्लेरेशन रिगार्डिंग एक्सटेंस ऑफ अवॉइडेंस ट्रांजेक्शंस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, कि ये ट्रांजेक्शन, information relating to books of accounts of the corporate data and such other documents relating to such period as may be specified। तो बुक्स वगैरह भी लगानी है, क्योंकि ये मिक्स कर दिया इन्होंने, भाई इसमें क्या है, कॉर्पोरेट डेटा सेक्शन 10 वाले भी मिक्स कर दिए, सेक्शन 10 में, सेक्शन 10 की एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में लगती है, फॉर्म 6 में लगती है, फॉर्म 6 के साथ में बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह लगानी पड़ती है, होता है ना सीआईआरपी के केस में। तो यहाँ पर इन्होंने रेगुलेशन 18 कर दिया, तो रेगुलेशन 18 भी थोड़ा सा क्विकली देख लेते हैं कि क्या कहता है। बुक्स कितने साल की लगानी है,
2 years. हाँ, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर फॉर द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। फिर प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर मेड अप टू द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक है, वहां पर क्या है, वहां नॉट अर्लियर देन 14 डेज है ना, सेक्शन 10 वाली एप्लीकेशन में। यहां पर क्या है, मेड अप टू द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। एंड फॉर्म P5 सबमिटेड बाय द AR। अगर कोई AR है तो फिर फॉर्म P5 भी लगा। ठीक है, ये हमारा बेयर कोड पे दोबारा आ गया हम लोग। The adjudicating authority shall within a period of 14 days। अब adjudicating authority 14 days में क्या करेगी, it will either admit the application or reject the application। ठीक है, और रिजेक्ट करने से पहले अगर कोई डिफेक्ट है तो उसको 7 दिन का टाइम देगी। एंड द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो 54D पर चलते हैं। 54D बोलता है टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन। टाइम लिमिट कितनी है, टाइम लिमिट आपके पास 120 डेज है। और ये 120 डेज कब से है, जब से एप्लीकेशन एडमिट हुई है। 90 डेज आप पहले भी ले चुके हैं, इससे पहले आपने कहा था ना, जब आपने डिक्लेरेशन किया, डिक्लेरेशन में आपने कहा भाई हम 90 डेज के अंदर एप्लीकेशन फाइल करेंगे, है ना। तो 90 डेज में आप क्या करते रहे, वो आरपी ने देखा भाई ये एलिजिबल है नहीं है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, कई चीजें है ना उसमें। डिक्लेरेशन के बाद ही तो है ना, स्पेशल रेजोल्यूशन भी है, फिर वो बेस रेजोल्यूशन प्लान प्रिपेयर कर रहा है, ये सब चीजें। और बेस रेजोल्यूशन प्लान को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल चेक भी कर रहा है कि भाई ये 54K की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है कि नहीं करता। ये सब काम तो एप्लीकेशन फाइल करने से पहले ही करने हैं, है ना। तो वो 90 डेज का काम में ये काम करता। The prepackaged insolvency resolution process shall be completed within a period of 120 days without prejudice to subsection 1। अब जैसे CIRP में क्या होता है कि आपको 165 डेज के अंदर एक रेजोल्यूशन प्लान देना होता है ना, बिकॉज 15 डेज यू हैव टू लीव फॉर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है भाई आप 30 डेज छोड़ो उसके लिए, 90 डेज में आप पूरी अपनी कार्रवाई कर लो जो भी करनी है। ठीक है, विदाउट प्रेजुडिस सेक्शन 1 the resolution professional shall submit the resolution plan as approved by the committee of creditors to the adjudicating authority under subsection 4 or subsection 12 as the case may be of section 54K within a period of 90 days from the prepackaged insolvency commencement date। Where no resolution plan is approved by the committee of creditors within the time period referred to in subsection 2, the resolution professional shall on the day after the expiry of such time period file an application with the adjudicating authority for termination of this process। यहां लिक्विडेशन नहीं होता, CIRP में तो क्या होता है, अगर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ तो लिक्विडेशन हो जाता है। यहां लिक्विडेशन नहीं होगा, यहां दोबारा पुनः मुझको भाव भाई ये टर्मिनेट हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, तो क्या एक्सटेंशन का कोई प्रोविजन है PPIRP में, जैसे CIRP में होता है भाई एक्सटेंशन हो जाएगा, यहाँ है कुछ? नहीं सर, नहीं। यहाँ ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, 90 डेज में अगर रेजोल्यूशन प्लान पास नहीं हुआ तो आपको 91st डे को ये एप्लीकेशन भेज देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर टर्मिनेशन ऑफ दिस प्रोसेस। 54E 54E बोलता है डिक्लेरेशन ऑफ मॉरेटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी shall on the prepackaged insolvency commencement date along with the order of admission under section 54C declare a moratorium। मॉरेटोरियम में क्या, वही सेक्शन 14 को रेफरेंस दे दिया। ठीक है, रेफर टू इन सबसेक्शन 1 read with subsection 3 of section 14 which shall mutatis mutandis apply to the proceedings under this chapter, appoint a resolution professional named in the application if no disciplinary proceeding is pending। ठीक है, और अगर कोई डिसिप्लिनरी पेंडिंग है तो रिकमेंडेशन ले लेंगे बोर्ड से। कॉज ए पब्लिक अनाउंसमेंट of the initiation of prepackaged insolvency resolution process to be made by the resolution professional in such form and manner as may be specified immediately after his appointment। अब ये जो पब्लिक अनाउंसमेंट है, यहां पर क्या लिखा, यहां पर आपने रेगुलेशन 19 दे दिया। तो एक बार रेगुलेशन 19 देख लेते हैं कि रेगुलेशन 19 क्या कहता है पब्लिक अनाउंसमेंट के बारे में, कि वो रेगुलेशन वो होगा कैसा पब्लिक अनाउंसमेंट। ठीक है, the resolution professional shall make a public announcement
within 2 days of the commencement of the process. The public announcement referred to in sub regulation 1 shall be in form P9 sent to every creditor listed in form P2. ठीक है, P2 तो पहले ही बना लिया था उसने लिस्ट, P2 हमने देख लिया. Sent to information utilities published on the website if any of the corporate debtor and the board. अब P9 देख लेते हैं एक बार. तो क्या पेपर में अनाउंसमेंट करनी है या नहीं करनी है? जैसे No, सीआई sir. में तो होता ना पेपर में करना है, तो यहाँ ये पब्लिक अनाउंसमेंट पेपर में होगी या नहीं होगी? नहीं सर, only published on the website of CD and board, sir. तो यहाँ कोई पेपर में अनाउंसमेंट नहीं हो रही है. और ये बात और क्लियर हो जाती है जब हम फॉर्म P9 देख लेते हैं. ये है पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर द अटेंशन ऑफ द क्रेडिटर्स. ठीक है, नोटिस इज hereby given that the adjudicating authority dash bench has ordered for the commencement of PPIRP. ये पर्टिकुलर्स दे दिए इन्होंने. ठीक है, ये आ गया आपका पब्लिक अनाउंसमेंट. और ये पब्लिक अनाउंसमेंट आपकी पेपर में नहीं जा रही. ठीक है, ये फॉर्म P9. The order of moratorium shall have effect from the date of such order till the date on which the prepackaged insolvency resolution process comes to an end. 54F क्या बोलता है? Duties and powers of resolution professional during prepackaging. अब ये सेकेंड रोल शुरू हो गया. पहला रोल क्या था? बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन. बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन वो क्या क्या चेक कर रहा था? 54A की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है कि नहीं, बेस रेजोल्यूशन प्लान है कि नहीं, डिक्लेरेशन रेजोल्यूशन, ये सब चीजें चेक कर रहा था. अब यहाँ क्या चेक कर रहा है? यहाँ पर बेसिकली अब क्योंकि सीडी कंट्रोल तो सीडी का ही है, डायरेक्टर्स की पावर सस्पेंड नहीं हो रही यहाँ पर. इन केस ऑफ CIRP द पावर्स ऑफ द बोर्ड स्टैंड सस्पेंडेड, बट इट इज नॉट द केस हियर इन केस ऑफ PPIRP. ठीक है, the resolution professional shall conduct the prepackaged insolvency resolution process of a corporate debtor during the prepackaged insolvency resolution process period. ठीक है, यहां पर लिखा कंडक्ट. ठीक है, the resolution professional shall perform the following duties, namely confirm the list of claims submitted by the corporate debtor under section 54G in such manner as may be specified. ठीक है, तो 54G में जो लिस्ट ऑफ क्लेम्स सबमिटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर है, ठीक है, उसको ये कंफर्म करेगा. इन्फॉर्म क्रेडिटर्स रिगार्डिंग देयर क्लेम्स एज कंफर्म्ड अंडर क्लॉज A इन सच मैनर एज स्पेसिफाइड. मेंटेन एन अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम्स इन सच मैनर एज स्पेसिफाइड. मॉनिटर मैनेजमेंट. देखिए डिफरेंस क्या है, ये मॉनिटर का काम कर रहा है, क्लास टीचर कोई दूसरा है. कॉर्पोरेट डेटर जो फाइलिंग वगैरह की जिम्मेदारी किसकी होगी? कॉर्पोरेट डेटर की. मान लो टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, GST रिटर्न फाइल करनी है, कौन करेगा? CD करेगा. ये मॉनिटर करेगा कि हो रहा है सबके, नहीं हो रहा. ठीक है, दोनों रोल में फर्क है. मॉनिटर मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. इन्फॉर्म द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इन द इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द ऑब्लिगेशंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स एज द केस में. मॉनिटर का काम क्या होता है? क्लास में कोई बच्चा शरारत कर रहा है तो टीचर को बताते हैं, तो ये मॉनिटर का काम है. ये क्या करेगा? ये इन्फॉर्म करेगा COC को. ठीक है, कि भाई ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या पार्टनर्स, इन्होंने ये ब्रीच किया है. ठीक है, constitute the committee of creditors and convene and attend all its meetings. कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कॉन्स्टिट्यूट करेगा और कन्वीन करेगा और अटेंड करेगा सारी मीटिंग्स. प्रिपेयर द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम based on the basis of the preliminary information memorandum submitted under section 54G. तो 54G अब आने वाला है, हम पढ़ेंगे उसमें कि प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम CD बनाएगा. ठीक है, और ये उसके बेसिस पर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा. ठीक है, RP and any other relevant information in such form and manner as may be specified. The applications for avoidance of transactions under chapter 3. एक तो CD ने एप्लीकेशन दे दी थी. ठीक है ना, CD ने फॉर्म भर दिया था. P7 था ना, क्या था रविंद्र जी? फॉर्म P7 था ना शायद.
जो सीडी ने फॉर्म भरा था अवॉइडेंस के लिए, हाँ ये सर P7 सर। है ना? हाँ, अब ये भी फाइल कर सकता है एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड सच अदर ड्यूटीज में भी स्पेसिफिक। ये फिर रेगुलेशंस में हम पढ़ेंगे क्या क्या इसकी ड्यूटीज। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर्स। क्या क्या पावर्स हैं? एक्सेस ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द कॉर्पोरेट डेटा, एक्सेस द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा फ्रॉम एन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स, ठीक है, अटेंड मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स एज द केस में भी। भाई बोर्ड तो जब चालू है, जब बोर्ड काम कर रहा है तो बोर्ड की मीटिंग भी होगी, अब बोर्ड की मीटिंग ये भी अटेंड करेगा, ठीक है। अपॉइंट अकाउंटेंट्स, लीगल और अदर प्रोफेशनल्स इन सच मैनर एज में भी, अगर इसको चाहिए भाई कोई अकाउंटेंट लीगल या अदर प्रोफेशनल तो अपॉइंट भी कर सकता है। Collect all information relating to the assets, finances, and operations of the corporate data for determining the financial position of the corporate data and the existence of any transactions that may be within the scope of provisions relating to avoidance, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, क्योंकि अगर इसको पीयूएफए एप्लीकेशन फाइल करनी है अवॉइडेंस एप्लीकेशन, तो उसके लिए इसको बुक्स तो देखनी पड़ेगी ना। Then business operations for the previous 2 years from the date of the prepackaged insolvency commencement date. Financial and operational payments for the previous 2 years from the date of the prepackaged insolvency commencement date. List of assets and liabilities as on the initiation date. And such other matters as may be specified. Take such other actions in such manner as may be specified. From the date of appointment of the resolution professional, the financial institutions maintaining accounts of the corporate data shall furnish all information, ठीक है। अब ये अपॉइंट तो हो गया, तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये किसको देंगे? ये भी ये इंफॉर्मेशन देंगे आरपी को एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय हिम। कंपनी को भी देते रहेंगे इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर आरपी मांगेगा तो उसको भी देंगे, ठीक है। The personnel of the corporate data, its promoters and any other person shall extend all assistance and cooperation, ठीक है। और प्रोविजन सेक्शन 19 वाले अप्लाई होंगे। The fees of the resolution professional and any expenses incurred by him shall be determined in such manner as may be specified, provided that the committee of creditors may impose limits and conditions on such fees and expenses. तो फीस और एक्सपेंसेस पर सीओसी जो है वो लिमिट लगा सकती है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द फीस एंड एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड प्रायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल बी सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन बाय इट। द फीस एंड एक्सपेंसेस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 6 शैल बी बोर्न इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड, ठीक है। नाउ 54G, 54G इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 54G क्या बोलता है? 54G टॉक्स ऑफ लिस्ट ऑफ क्लेम्स एंड प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अब आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो चुकी है, ठीक है। एप्लीकेशन एडमिट होने के 2 दिन के अंदर ये इसको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। किसको देने हैं? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। डॉक्यूमेंट बना कौन रहा है? सीडी। लिस्ट ऑफ क्लेम्स along with the details of the respective creditors, their security interest and guarantees if any, and preliminary information memorandum containing information relevant for formulating a resolution plan. इसके लिए आपका रेगुलेशन 40 और 41 है। तो क्या प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का भी कोई फॉर्मेट है या नहीं? हाँ जी, कोई फॉर्मेट है या नहीं है? सर डिटेल्स सेम एज इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ले लेंगे ना? डिटेल्स है, उसमें भी नहीं है फॉर्मेट। The preliminary information memorandum shall provide details required under sub regulation 2। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, बंदा चक्कर में पड़ जाता है एग्जाम में। The information memorandum shall contain the following details: assets and liabilities with such description, ठीक है। तो ये सारी वही चीजें हैं जो वहां दे रखी है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में, ठीक है। ये हमने वहां पर भी पढ़ा, रेगुलेशन 36 पढ़ा था ना, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। The resolution professional shall finalize the information memorandum with details under sub regulation 2
and submit to members of the committee within 14 days of the prepackaged insolvency commencement date after receiving an undertaking that such member or resolution applicant shall maintain confidentiality. अब यहां पर ये 14 डेज का पीरियड है, ठीक है, कि इसको सीओसी को 14 डेज में देना है. सीआईआरपी में भी ऐसा कोई पीरियड है क्या? सीआईआरपी में भी ये तो कहता है ना कि भाई आपको ये जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है मेंबर्स ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को देना है. तो क्या सीआईआरपी में ऐसा कोई पीरियड है या नहीं है? So there will be 14 days, you know. नहीं, CIRP रेगुलेशन देख में. लीजिए. रेगुलेशन 36 है ना. रेगुलेशन 36 क्या बोलता है? The resolution professional shall submit the information memorandum in an electronic form to each member of the committee on or before the 95th day from the insolvency commencement date. ठीक है जी. और यहाँ क्या है? 14 days of the prepackaged insolvency after receiving an undertaking from a member of the committee to the effect that such member or resolution applicant shall maintain confidentiality of the information and shall not use such information to cause an undue gain or undue loss. जैसे मान लो यहाँ पर पूछ लेगा वो, तो वो क्या 2 ऑप्शन दे देगा, 14 डेज भी दे देगा, 36 डेज भी दे देगा, 95 डेज भी, इस तरह से. तो वो आपको ध्यान रखना है कि पीपीआईआरपी में 14 डेज है और वहां पर कितना है, 95 डेज. A member of the committee may request the RP or corporate debtor for further information of the nature described in this regulation, and the resolution professional or the corporate debtor, as the case may be, shall provide such information to all members within reasonable time if such information has a bearing on the resolution plan. ठीक. ठीक है जी. तो ये हम 54G पर थे. 54G बोलता है the corporate debtor shall within 2 days of the prepackaged insolvency commencement date submit to the RP the following information updated as on that date in such form and manner as may be specified. List of claims along with details of the respective creditors, their security interest and guarantees if any. Preliminary information memorandum containing information relevant for formulating a resolution. Where any person has sustained any loss or damage as a consequence of the omission of any material information or inclusion of any misleading information. ठीक है. Every person who is a promoter. तो अगर मान लो जैसे, क्योंकि इसमें बेसिकली इंफॉर्मेशन दे कौन रहा है, इंफॉर्मेशन तो आपका कॉर्पोरेट डेटर ही दे रहा है, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स भी उसी ने दी है, पब्लिक अनाउंसमेंट हो नहीं रही है ना. जो उसने इंफॉर्मेशन दी वो उससे कंफर्म कर लेता है आरपी कि भैया ये इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं. तो अगर मान लो डायरेक्टर ने किसी का नाम नहीं दिया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? प्रमोटर, डायरेक्टर या पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज द केस में बी एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ क्लेम्स और द प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बाय द कॉर्पोरेट डेटर. ठीक है. और द हु हैज ऑथराइज्ड द सबमिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ क्लेम्स और द प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम shall without prejudice to section 77A be liable to pay compensation to every person who has sustained such loss or damage. ठीक है. तो ये प्रमोटर, डायरेक्टर या पार्टनर की लायबिलिटी बन जाएगी. No person shall be liable under subsection 2 if the list of claims or the preliminary information memorandum was submitted by the corporate debtor without his knowledge or consent. ठीक है. कोई ऐसा डायरेक्टर है जिसकी नॉलेज या कंसेंट के बिना सबमिट किया तो वो लायबल नहीं होगा. ठीक है. और ये जाएगा कहाँ? ये डैमेजेस क्लेम करने के लिए ये ही विल हैव टू मूव टू ए कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन. ठीक है. एनसीएलटी में नहीं जाना, इसको कोर्ट में जाना. ठीक है. 54H 54H टॉक्स ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने हाईलाइट कर दिया, टू मूव ए कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन. 54H इज मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. During the prepackaged insolvency resolution process period, the management of the affairs of the corporate debtor shall continue to vest in the board of directors or partners as the case may be. ठीक है.
तो किसके पास कंट्रोल रहेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास. The board of directors or the partners, as the case may be, of the corporate debtor shall make every endeavor to protect and preserve the value of the property and manage its operations as a going concern. तो प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व की पावर किसके पास है? ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Who has to manage it as a going concern? CD. ठीक है. The promoters, members, personnel and partners, as the case may be, of the corporate debtor shall exercise and discharge their contractual or statutory rights and obligations in relation to the corporate debtor, subject to the provisions of this chapter and such other conditions and restrictions. So who is responsible for contractual or statutory rights and obligations? The promoters, members, personnel and partners. RP, what RP is doing? He is monitoring. 54I, Committee of Creditors. The resolution professional shall, within 7 days of the prepackaged insolvency commencement date, constitute a committee of creditors based on the list of claims confirmed under clause A of subsection 2 of section 54F, provided that the composition of the committee of creditors shall be altered on the basis of the updated list of claims in such manner as may be specified, and any such alteration shall not affect the validity of any past decisions of the committee of creditors. Okay. The first meeting of the committee of creditors shall be held within 7 days of the constitution of the committee of creditors. The provisions of section 21, except subsection 1 thereof, shall mutatis mutandis apply in relation to the committee of creditors, provided that for the purpose of this subsection, a reference to resolution professional shall be construed as a reference to corporate debtor or the resolution professional. Why? Because here the corporate debtor is also responsible. Now let us see these regulations 24, 25, 26, 27 to 37. Okay. Before we move to 54J, let us see these regulations regarding committee. So regulation 24. Committee with only creditors in a class. Okay. Where the corporate debtor is only creditors in a class and no other financial creditor who are not related parties, the committee shall consist of only the authorized representatives. Okay. Committee with only operational creditors. Okay. Where the corporate debtor has no financial debt or all the financial creditors are related parties, the committee shall consist of operational creditors being not related parties to the corporate debtor as under 10 largest operational creditors by value. And if the number of operational creditors is less than 10, the committee shall include all such operational creditors. One representative elected by all workmen. One representative elected by all employees. A member of the committee formed under this regulation shall have voting right in proportion of the debt due to such creditor or debt represented as the case may be to the total debt. And how the total debt is to be calculated, that is also given. Amount of debt due to the creditors listed in clause A of sub-regulation 1. That means due to 10 largest operational creditors. Amount of the aggregate debt due to workmen. For workmen, it is not the debt of the representative of workmen, but the aggregate debt due to workmen. The amount of aggregate debt due to employees. ठीक है. और इस proportion में a committee formed in accordance with regulation 24 or 25 as the case may be, and its members shall have the same rights as a committee comprising financial creditors. Change in committee. Any change in the composition of committee shall be intimated to all the members of the committee within 2 days of such change. Okay? Now regarding meetings. A resolution professional may convene a meeting of the committee as and when he considers necessary and shall convene a meeting if a request is made by members representing 33%. Okay? If 33% request, then mandatory. Otherwise, even if one member requests, he can. Then notice. Notice kitna hai? A member of the committee shall be, a meeting of the committee shall be convened by giving not less than 3 days notice in writing to every participant at the address provided to the resolution professional. The committee may reduce the notice period from 3 days to such other period of not less than 24 hours.
as it deems. Provided that the committee may reduce the period to such other period of not less than 48 hours if there is any authorized representative. Service of notice. Service कैसे होना है? A notice may be sent to the participant through email as a text or as an attachment. और subject line में क्या रहेगा? Name of the corporate data, place if any, time and date. When notice is sent in non-editable document, तो PDF में आपको link for instructions वगैरह देना पड़ेगा. ये सारा डिटेल है, आप देख सकते हैं, बहुत बात नहीं है. The obligations of the RP shall be satisfied when he transmits the email, and he shall not be held responsible for a failure in transmission beyond his control. Now, contents of the notice for meeting. The notice shall inform the participants of the venue, time, and date of the meeting and of the option available to them to participate through video conferencing or other audio and visual means, and shall also provide all the necessary information to enable participation through video conferencing or other audio and visual means. Okay. The notice of the meeting shall provide that a participant may attend and vote in the meeting either in person or through a representative who is not a related party of the corporate data. Okay. So, whether a representative can be a related party? No. Even the representative should not be a related party of the corporate data. Provided that such participant shall inform the resolution professional in advance of the meeting the identity of the representative who will attend and vote, and shall forward an authorization in favor of the representative. Notice में क्या क्या रहेगा? The notice of the meeting shall contain list of matters to be discussed, list of issues to be voted, copies of all documents. Notice of the meeting shall state the process and manner for voting and the time schedule, including the time period during which the votes may be cast. Provide the login ID and the details. Provide the contact details of the person who will address the queries. Quorum कितना रहेगा? At least 33%. ठीक है? Provided that the committee may modify the percentage of voting share required for quorum in respect of any future meetings of the committee. Where a meeting of the committee could not be held for want of quorum, unless the committee has previously decided, the meeting shall automatically stand adjourned at the same time and place on the next day. CIRP में भी यही regulations. In the event a meeting of the committee is adjourned, the adjourned meeting shall correlate with the members of the committee attending the meeting. Participation through video conferencing. Yes. इसमें कोई इतना important नहीं है. That conduct of meeting. The resolution professional shall act as the chairperson of meetings of the committee. ठीक है. At the commencement of a meeting, the resolution professional shall take a roll call of every participant attending the meeting at the venue or participant. अब ये बार बार वर्ड आ रहा है पार्टिसिपेंट, तो एक बार देख लेते हैं कि पार्टिसिपेंट का मतलब क्या है. ठीक है, पार्टिसिपेंट का मतलब दिया होगा ना इन्होंने. पार्टिसिपेंट कौन है? Entitled per meeting. हाँ. Participant means a person entitled to attend the meeting under section 24 or any other person authorized by the committee to attend the meeting. तो section 24 में ले जाता है आपको ये. और section 24 आपका क्या बोलता है? section 24 बोलता है कि members of suspended board of directors वगैरह. तो directors तो आएंगे ही आएंगे इसमें, यहाँ तो suspend भी नहीं हुआ ना. Yeah, representative operation directors having members and aggregate operation. That in respect of the claim in respect of the provision of services or the mental respect of June arising out of arising under हाँ जी. Millets, they are using the word. ये आवाज बंद कर दीजिए अपने बीच में. श्याम कृष्णा जी को आप लगता है उसको पढ़ रहा होगा वहां से वो ना. Sir, actually, I am in traveling, sir. Okay, no issues. I think I may not be able to read. I am in driving actually. Okay. But I am able to listen your lecture. That fortunately. Okay. So now regulation 28.
Notice. A meeting of the committee shall be convened by giving not less than 3 days notice in writing to every participant at the address provided to the resolution professional by the creditor. Okay. The committee may reduce the notice period from 3 days to not less than 24 hours and 48 hours in case there is an AR. Service of notice. ये तो हो ही गया हमारा, पढ़ लिया हमने. This we have read. Contents. ये भी हो गया था. कोरम भी देख लिया था. पार्टिसिपेशन थ्रू वीडियो, कंडक्ट ऑफ द मीटिंग यहाँ पर थे हम लोग. The resolution professional shall act as the chairperson of meetings of the committee. At the commencement of a meeting, the resolution professional shall take a roll call of every participant attending the meeting or participating through video conferencing. Name, whether he is attending in the capacity of a member of the committee or any other participant, whether he is representing a member or group of members, location that he has received the agenda, nobody else. तो ये सारा चीजें आपके पास, ठीक है. Now committee with only creditors in a class. The resolution professional shall provide the list of creditors in each class to the respective authorized representative. ठीक है. And AR acts as the postman. He is acts as the link. ठीक है. और ये इसकी फीस है 15,000, 20,000, 25, वो CIRP वाली फीस है, कोई इसमें फर्क नहीं. Voting by committee. Any action requiring approval of the committee shall be considered in the meetings of the committee. The resolution professional shall take a vote of the members of the committee present in the meeting on any item listed for voting after discussion on the same. At the conclusion of a vote at the meeting, the resolution professional shall announce the decision taken by the members present in the meeting on items along with the names of the members of the committee who voted for or against the decision or abstained from voting. The resolution professional shall circulate the minutes of the meeting by electronic means to all members of the committee and authorized representative within 24 hours of the conclusion of the meeting. Voting by AR. ठीक है. ये वो उसी की बात करता है, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 3 है. ठीक है. That we have already discussed during CIRP that he इसका वोट कंसिडरेशन कैसे होगा इन केस ऑफ AR. ठीक है. 12 एप्लीकेशन में इंडिविजुअल अदर देन 12 मोर देन 50% मींस 100%. Then voting through electronic means. Now let us again go back to the section. Now 54J. What 54J says? Vesting management of corporate debtor with RP. Where the committee of creditors at any time during the prepackaged insolvency resolution process period by a vote of not less than 66% of the voting shares resolves to vest the management of the corporate debtor with the resolution professional. The resolution professional shall make an application. So the COC may decide that, okay, let the management be vested with the RP instead of the board of directors. And in this case, RP will make the application to the adjudicating authority in such form and manner as may be specified. So there is a regulation 51 for this. So let us see regulation 51 also. This is regulation 51. So for the purpose of subsection 1 of section 54, the resolution professional shall make an application in form P14. तो P14 में application आपको करनी है. ये form P14 क्या है ये भी देख लेते हैं. This is P14, application for vesting of management. So committee in its meeting, they have decided to vest the management with the RP. ये सर इस तरह से दे. On an application made under subsection 1, if the adjudicating authority is of the opinion that during the PPIRP, the affairs of the corporate debtor have been conducted in a fraudulent manner, or there has been gross mismanagement of the affairs of the corporate debtor,
it shall pass an order vesting the management of the corporate debtor with the resolution professional. Okay. Notwithstanding anything to the contrary contained in this chapter, the provisions of subsection 2 and 2A of section 14, section 17, clause E to G of section 18, section 1920, subsection 1 of section 25, and clauses A to C and clause K of subsection 2 of section 25 and section 28 shall mutatis mutandis apply to the proceedings under this chapter. ठीक है. So basically वो CIRP वाले जो provisions है वो यहाँ पर भी apply हो रहे हैं. Now 54K. 54K is talking of consideration and approval of the resolution plan. The corporate debtor shall submit the base resolution plan referred in clause C of subsection 4 of section 54A to the resolution professional within 2 days of the prepackaged insolvency commencement date, and the resolution professional shall present it to the committee of creditors, because this base resolution plan is prepared by the CD, and he shall submit the base resolution plan, which is referred to in clause C of subsection 4 of section 54A to the resolution professional. And please note that the approval of the financial creditors has already been taken before filing the application. They have also seen this base resolution plan. आप 54A एक बार देख लीजिए, 54A 4C. एक मिनट. ये ना 54A 4C ये यहाँ पर. Prior to seeking approval from financial creditors, the corporate debtor shall provide such financial creditor with this base resolution plan. ये इसकी बात कर रहा है, ये वाला जो base resolution plan है. ठीक है ना. तो ये this is being referred to in section 54K. So he will present it to the committee of creditors. The committee of creditors may provide the corporate debtor an opportunity. अब जो COC है वो बोलेगा कि भैया आप बेस रेजोल्यूशन प्लान तो हमें ठीक नहीं लग रहा, इसको थोड़ा रिवाइज कर दो. ठीक है. Prior to its approval under subsection 4 or invitation of prospective resolution applicants under subsection 5 as the case may be, the resolution plans and the base resolution plan submitted under this section shall conform to the requirements referred to in subsection 1 and subsection 2 of section 30. ठीक है. सेक्शन 30 का रिक्वायरमेंट हमने देख लिया, लिक्विडेशन वैल्यू फलाना ढिमकाना वो सब इसके अंदर होना चाहिए, सुपरविजन, इम्प्लीमेंटेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, कंप्लायंस विद लॉज. And the provisions of subsection 1, 2 and 5 of section 30 shall mutatis apply to the proceedings under this chapter. The committee of creditors may approve the base resolution plan for submission to the adjudicating authority if it does not impair any claims owed by the corporate debtor to the operational creditors. ठीक है. अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का कोई इंपेयरमेंट नहीं है, ऑपरेशनल क्रेडिटर को पूरा पेमेंट कर रहा है, तो ये इस प्लान को भी अप्रूव कर सकती है COC. ठीक है. बट नाउ सपोज द कमिटी ऑफ क्रेडिटर डज नॉट अप्रूव द बेस रेजोल्यूशन प्लान or the base resolution plan impairs any claims owed by the corporate debtor of the operational creditors, the resolution professional shall invite prospective resolution applicants to submit a resolution plan or plans to compete with the base resolution plan in such manner as may be specified. Please remember here that in case of corporate MSMEs, the corporate is always given preference because he is accorded some protection also.
कि भैया आप अपने आप ही बेस रेजोल्यूशन प्लान दे दो, तो वो भी एडमिट हो सकता है। पर मान लो कुछ देना ही ना चाहे कॉर्पोरेट डेटा, तो उस केस में फिर क्या होगा? द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स विल इनवाइट द अदर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। फिर भी वो भी क्या करेंगे? उनमें से भी बेस्ट सेलेक्ट करेंगे। सपोज दे इनवाइट रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स एंड 5 रेजोल्यूशन प्लान्स कम, 5 में से बेस्ट सेलेक्ट होगा, और उस बेस्ट का कंपटीशन किसके साथ होगा? इसी बेस रेजोल्यूशन प्लान। ठीक है। The resolution applicants submitting resolution plans pursuant to invitation under subsection 5 shall fulfill such criteria as may be laid down by the resolution professional with the approval of the committee of creditors having regard to the complexity and scale of operations. वही 25(2)(h), section 25(2)(h) we have already read. Same. The resolution professional shall provide to the resolution applicants a basis for evaluation of resolution plans for the purpose of subsection 9 as approved by the committee of creditors subject to such conditions as may be specified, and the relevant information referred to in section 29 which shall mutatis mutandis apply to the proceedings under this chapter. 29 में क्या information है? Information memorandum. ठीक है. The resolution professional shall present to the committee of creditors for its evaluation resolution plans which conform to the requirements referred to in subsection 2 of section 30. ठीक है. The committee of creditors shall evaluate the resolution plans presented by the resolution professional and select a resolution plan from amongst them. जितने भी प्लान आए ना, सपोज 5 plans have come, so they will select one. ठीक है. एक सेलेक्ट कर लेंगे जो भी बेस्ट होगा. Where on the basis of such criteria as may be laid down by it, the committee of creditors decides that the resolution plan selected under subsection 9 is significantly better. सबसे पहले क्या देखेंगे कि अगर क्या वो significantly better है than the base resolution plan, such a resolution plan may be selected for approval. फिर उस केस में सीडी के पास जाने की जरूरत नहीं है भाई, सीडी ज्यादा ही सियाना बन रहा है, कुछ देना ही नहीं चाह रहा, तो वो क्या कह रहे हैं, जो सिग्निफिकेंटली बेटर रेजोल्यूशन प्लान है उसी को आप सेलेक्ट कर लो, उसको दे दो कंपनी, provided that the criteria laid down by the committee of creditors under this subsection shall be subject to such conditions as may be specified. Now suppose the resolution plan selected under subsection 9 is not considered for approval or does not fulfill the requirements of subsection 10, it shall compete with the base resolution plan. ठीक है. इसको yes. Sir, here we don't have to place all the resolution plans before the COC. नहीं, we have to तभी तो सेलेक्ट करेंगे ना. COC will only select. The CA will only select. लिखा ना 9 पॉइंट देखिए. The committee of creditors shall evaluate the resolution plans presented by the resolution professional. Resolution professional तो प्रेजेंट कर देगा, सेलेक्ट कौन का, इवेल्युएट कौन करेगी? कमिटी. CIRP में सेम प्रोविजन है. Sir. एंड सेलेक्ट ए रेजोल्यूशन प्लान फ्रॉम, उनमें से एक सेलेक्ट कर लेंगे. अगर वो सिग्निफिकेंटली बेटर है तो दे विल सेलेक्ट दैट प्लान. अगर सिग्निफिकेंटली बेटर नहीं है तो दोनों का कंपटीशन करा देंगे आपस में. Where the resolution plan selected under subsection 9 is not considered for approval or does not fulfill the requirements of subsection 10, it shall compete with the base resolution plan in such manner and subject to such conditions as may be specified, and one of them shall be selected for approval. ठीक. The resolution plan selected for approval may be approved by the committee of creditors for submission to the adjudicating authority, provided that where the resolution plan selected for approval under subsection 11 is not approved by the committee of creditors, the resolution professional shall file an application for termination of the PPIRP process. The approval of the resolution plan under subsection 4 or subsection 12 as the case may be by the committee of creditors shall be by a vote of not less than 66% after considering its feasibility and viability. Okay. While considering the feasibility and viability of a resolution plan, where the resolution plan submitted by the corporate debtor provides for impairment of any claims owed by the corporate debtor. देखिए यहां पर किसकी बात कर रहा है? impairment of any claims. So they are not saying that you cannot impair the claims of operational creditors. So here
even the claims of operational creditors may be impaired. It is talking of any claims owed by the corporate debtor. The committee of creditors may require the promoters of the corporate debtor to dilute their shareholding or voting or control rights in the corporate debtor. So when it says that, okay, he is prepared to pay less, so then he will also be required to dilute the stake. भाई उनको बोलेगा तुम कह रहे हो कि भाई क्रेडिटर्स को सेक्रीफाइस करने के लिए बोल रहे हो, तो तुम भी कुछ सेक्रीफाइस करो, ठीक है, अपनी शेयर होल्डिंग या वोटिंग या कंट्रोल राइट्स को भी थोड़ा सा डाइल्यूट करो. प्रोवाइड दैट वेयर द रेजोल्यूशन प्लान डज नॉट प्रोवाइड फॉर सच डाइल्यूशन, the committee of creditors shall, prior to the approval of such resolution plan, as the case may be, record reasons for its approval. लेकिन अगर dilution नहीं हो रहा तो फिर COC will record reasons for approval. The resolution professional shall submit the resolution plan as approved by the committee of creditors under subsection 4 or subsection 12, as the case may be, to the adjudicating authority. ठीक है. Explanation 1. For the removal of doubts, it is hereby clarified that the corporate debtor, being a resolution applicant under clause 25 or section 5, may submit the base resolution plan either individually or jointly with any other person. ये जो बेस रेजोल्यूशन प्लान दे रहा है, ये कैसे दे रहा है? कोई जरूरी नहीं है कि अपने आप ही दे रहा है, वो ज्वाइंटली भी दे सकता, ठीक है ना. सीडी जो बेस रेजोल्यूशन प्लान देगा, ये जरूरी नहीं कि अपने आप अकेले ही देना है उसको, वो किसी को ज्वाइन भी कर सकता है. फॉर द पर्पस ऑफ सब सेक्शन 4 and 14, claims shall be considered to be impaired where the resolution plan does not provide for the full payment of the confirmed claims as per the updated list of claims maintained by the resolution professional. Now 54L talks of approval of the resolution plan. To approval, if the adjudicating authority is satisfied that the resolution plan meets the requirements, so it will approve the resolution plan, provided that the adjudicating authority shall, before passing an order, satisfy itself that the resolution plan has provision for its effective implementation. The order of approval under subsection 1 shall have such effect as provided under subsection 1, 3 and 4 of section 31, which shall mutatis mutandis apply to the proceedings under the chapter. अगर adjudicating authority is not satisfied, resolution plan does not confirm, तो क्या करेगी? रिजेक्ट कर देगी. इट मे विद इन 30 days of the receipt of such resolution plan by an order reject the resolution plan and pass an order under section 54N. क्यों 54N में फिर अलग चीजें दी गई. यहां पर ये नहीं कि सीधा लिक्विडेशन हो जाएगा, 54N में कुछ भी हो सकता है, ठीक है. वो 54N में डिटेल में बताएंगे कि अगर रिजेक्ट होगा तो क्या होगा. Notwithstanding anything to the contrary, where the adjudicating authority has passed an order under subsection 2 of section 54J. अब section 54J subsection 2 में क्या ऑर्डर पास किया था कि the powers of the management shall be vested with the RP. लेकिन अब जो रेजोल्यूशन प्लान आया, ठीक है, जो कमिटी ने अप्रूव किया, उसमें वही आदमी फिर दोबारा आ गया. कौन आदमी आ गया? जिसको निकाला था, ठीक है ना. It does not result in the change in the management or control of the corporate debtor to a person who was not a promoter or in the management or control of the corporate debtor. तो उस केस में क्या होगा? It shall pass an order rejecting such resolution plan, terminating the prepackaged insolvency resolution process and passing a liquidation order. तो फिर ये liquidation order पास कर देंगे, ठीक है. And declaring that the prepackaged insolvency resolution process cost, if any, shall be included as part of liquidation cost. ठीक है. क्या अपील हो सकती है अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 54N? तो अपील बिल्कुल हो सकती है, जो आपका सेक्शन 61 सबसेक्शन 3 में ग्राउंड्स दिए हुए हैं. 54N क्या बोलता है? टर्मिनेशन ऑफ प्रीपैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड, ठीक है. Where the resolution professional files an application with the adjudicating authority under the proviso to subsection 12 of section 54K or under subsection 3 of section 54D, the adjudicating authority shall within 30 days terminate and provide for the matter of continuation of proceeding. अब 54K का 12 क्या है, एक बार देख लेते हैं. 54K 12 अगर हम देखें तो 54K का 12 बोलता है
यहां पर वो टर्मिनेशन वाली प्रोवाइजो, प्रोवाइजो है ना सबसे, प्रोवाइजो में क्या है, प्रोवाइजो अगर हम देखें 54K12 वाला, प्रोवाइडेड दैट वेयर द रेजोल्यूशन प्लान सेलेक्टेड फॉर अप्रूवल इज नॉट अप्रूव्ड बाय द कमिटी, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर टर्मिनेशन। अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 54D क्या है, 54D सबसेक्शन 3, 54D सबसेक्शन 3 बोलता है आपका, So COC में plan approve नहीं हुआ हाँ है within the time frame, time हाँ, period. 90 डेज में आपका कोई प्लान अप्रूव नहीं हुआ तो भी टर्मिनेशन के लिए, ठीक है। और 54K में सीओसी ने कोई अप्रूव नहीं किया। दोनों में फर्क क्या है, अगर आपका 54D का 3 देखें तो कोई रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ है विद इन द टाइम पीरियड, ठीक है। और 54K का अगर हम 12 देखें तो यहां का है कि रेजोल्यूशन प्लान सेलेक्ट हो गया था अप्रूवल के लिए लेकिन वो कमिटी ने अप्रूव नहीं किया, ठीक है, उसमें तो आया ही नहीं, बेसिकली 54D वाले में तो आया ही नहीं 90 डेज में। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, इट विल टर्मिनेट द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट एंड प्रोवाइड फॉर द मैनर ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड फॉर अवॉइडेंस where the resolution professional at any time after the pre-packaged insolvency commencement date but before the approval of resolution plan under subsection 4 or subsection 12 as the case may be of section 54K intimates the adjudicating authority of the decision of the committee, ठीक है। अब इससे पहले भी टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे सीओसी में भी होता है ना, सीआईआरपी में भी एट एनी स्टेज दे में रिकमेंड लिक्विडेशन, दे में डिसाइड टू लिक्विडेट। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ लिक्विडेशन तो है नहीं, ये टर्मिनेशन है। लिक्विडेशन किस केस में है, लिक्विडेशन एक ही केस में है जहां उसको बाहर निकाला था मैनेजमेंट को लेकिन रेजोल्यूशन प्लान में वो दोबारा आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में और कमिटी ने अप्रूव भी कर दिया उसको, तो फिर वो कहेंगे भाई लिक्विडेशन कर दो। Where the adjudicating authority passes an order under subsection 1, the corporate debtor shall bear the prepackaged insolvency resolution process cost, if any. Notwithstanding anything to the contrary contained in this section, where the adjudicating authority has passed an order under subsection 2 of section 54J, and the prepackaged insolvency resolution process is required to be terminated under subsection 1, the adjudicating authority shall pass an order 54J वही डाइवेस्टिंग द मैनेजमेंट, तो उस केस में लिक्विडेशन हो जाएगा और ये कहेगा कि भाई ये लिक्विडेशन कॉस्ट का पार्ट बनाओ। 54 है इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी, ठीक है। अब ये कहते हैं भैया ये अगर सीआईआरपी के लिए एलिजिबल है, ऐसा भी हो सकता है ना, बिकॉज 10 लाख इज द मिनिमम डिफॉल्ट। सपोज यू आर ए कॉर्पोरेट एमएसएमई एंड द डिफॉल्ट इज से 10 करोड़, ठीक है, देन यू कैन गो इन आइदर फॉर पीपीआईआरपी और सीआईआरपी। अब आपको क्या लग रहा है, आपने पीपीआईआरपी में एप्लीकेशन लगा दी, बट अब 66% मेजोरिटी से आप कहते हो भाई पीपीआईआरपी में नहीं जाना हमारे को, सीआईआरपी में जाना, ठीक है। लेकिन अगर कॉर्पोरेट डेटर एलिजिबल होना चाहिए उसके लिए, मतलब 1 करोड़ से ऊपर का डिफॉल्ट होना चाहिए, तभी जा पाओगे आप, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो उस केस में भी क्या होगा, ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा और आपका जो है ये जो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट है, ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट है, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, ये आईआरपी बन जाएगा, पहले इसका नाम आरपी था, अब इसका नाम आईआरपी हो जाएगा क्योंकि सीआईआरपी पे तो आरपी आईआरपी होता है, ठीक। तो इतना ही है बेसिकली पीपीआईआरपी। अब इसके रेगुलेशंस कल देख लेंगे, आप थोड़ा सा एक बार दोबारा पढ़ के आइएगा इसको। तो आप में से कोई समराइज कर सकता है इसको जितना हमने आज पढ़ा, कोई समराइज करेगा 5 मिनट में, क्या चीज है ये, क्या पढ़ा हमने आज, एनीवन? खास तौर से जो रेजोल्यूशन प्लान वाला पार्ट था उसका। भाई देखो सबसे पहले क्या होगा, बेस रेजोल्यूशन प्लान देगा सीडी, ठीक है। नाउ सपोज दिस बेस रेजोल्यूशन प्लान डज नॉट इम्पेयर द क्लेम्स ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, देन द सीओसी में सेलेक्ट दैट बेस रेजोल्यूशन प्लान इटसेल्फ, ठीक है। दिस बेस रेजोल्यूशन प्लान may be presented by the CD along with somebody other also, some other person also. सेकंड सिचुएशन क्या है, COC does not approve this base resolution plan
or the revised base resolution plan. COC may ask the CD to revise the base resolution plan also. But COC को वो भी पसंद नहीं आया तो क्या होगा? They will invite other resolution applicants. Now suppose 5 resolution plans have come. They will select one amongst them. COC will select one amongst them. और उस वन का कंपटीशन कराएंगे इससे. ऐसा भी हो सकता है कि जो सिलेक्टेड है वो सिग्निफिकेंटली बेटर है, फिर कंपटीशन कराने का जरूरत नहीं है, फिर उसी को कंपनी हैंडओवर कर देंगे. ठीक है. बट इफ इट इज नॉट सिग्निफिकेंटली बेटर, फिर क्या होगा? फिर उन दोनों में कंपटीशन कराएंगे. वो स्विच चैलेंज मैकेनिज्म है, रेगुलेशन में हम पढ़ेंगे कल. और उसके बाद में फिर सीओसी रिकमेंड करेगी फॉर अप्रूवल. ऐसा भी हो सकता है कि चैलेंज भी करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, फिर भी सीओसी को पसंद नहीं आ रहा, तो फिर ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा. ठीक. लिक्विडेशन एक ही केस में होता है कि सपोज सीओसी हैज अप्रूव्ड फॉर डाइवेस्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट इन फेवर ऑफ द आरपी, और जो रेजोल्यूशन प्लान आ रहा है उस रेजोल्यूशन प्लान में वही आदमी दोबारा एंटर कर रहा है. ठीक है. तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है.